ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनका हमने 3-4 दफ़ा टाई अप करने की कोशिश की, बट पाकिस्तान के हालात ऐसे थे। आई बिलीव मुल्तान से उन्होंने आना था, तो इट वाज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट फाइनली थैंकफुली हमारा सेटअप हो गया एंड ही इज़ फाइनली हियर। वी हैव विद अस अनीस ख्वाजा. And this is going to be a little longer than my usual one, so bear with me. He is the CEO of MG Apparel. He's also the director for Mahmood Group. ये textile and not just textile, बहुत सारे और industries में भी operate कर रहा है since 1935. He is also the part of the board of directors for Pakistan Single Window. I believe that's a ease of doing business. A government body, federal. Right, federal. And then he's the director for Export Development Fund. He's the chairman for South Punjab Cricket Board. He is the chairman for Punjab Industrial Estates. He also is a founding partner of Ground Up, which is a venture capital firm that invests in startups. He is the vice chairman for All Pakistan Textile Mill Association, and he is here with us today. Sir, thank you so much for being part of the show. My absolute pleasure. Anis bhai, मैं थोड़ा सा conversation start करूँगा, just trying to understand early life, education, where were you born, and how was growing up in Pakistan for you? Well, growing up was more in Multan, and at this time of my age, I think it was an absolute blessing. बच्चे थे, normal schooling, Beacon House में गए, had the honor and privilege to go to a government college, which was life altering. के Beacon House के pampered बच्चे जब वो Bosan Road Government College में गए. So that's within Multan as well? That's within Multan as well. अच्छा. So from a place where you were 20 neat clean kids to a class जहाँ पर आप 150-200 बच्चों में होते थे, पता भी नहीं होता था कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, फुलिंग का डर है, NCA हो रही है, मार पड़ रही है, डांटे पड़ रही हैं, कभी फायरिंग हो रही है आपके सामने. And this was FSC or this was? This was FSC. FSC, right. So the point was that it was one of the best experiences as well, because life का एक different angle मिला. My parents, alhamdulillah, that we were blessed, but they also wanted me to learn. So मैं साइकिल पे स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, also because my friends used to do that, and मुझे याद है 1-2 बार हम टांगे पे भी आए गए. I don't see that them existing anymore, right. But so it was a very different sort of a journey. And then so we had this fantastic business administration department in the Bahauddin Zakaria University, Multan. I had applied in LUMS. मेरा तकरीबन I was sure कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, but my late grandfather and my father were very clear कि नहीं, we want you here in Multan. अच्छा. Stick with us. So I think that's very interesting, because a lot of the sort of textile heirs that I speak to, they generally tend to go to England. I mean, you're absolutely right. This is what it is now. Yeah. But जब मैंने आपसे कहा कि there was a lot of regret throughout my education career कि जी, why am I not going somewhere? Why am I not studying somewhere? Yeah. But I think उसमें all of these factors were there. And now when I look back, I think this was one of the best things I ever did, that I stayed there. Yeah. And with education, I got a lot of family values experience as well. Makes so sense. I studied predominantly up to my masters in Multan, but then हमेशा से problem तो था कि मैं रह गया पीछे. So then I started tapping around कि मैं कहाँ किधर किस किस्म के courses में दुनिया में जा सकता हूँ. So I started off with London School of Economics. I started going every year for a couple of months. Great experience. अचानक बहुत ही अच्छा exposure मिला. Then उसके बाद I had the opportunity of going to the London Business School, Harvard में भी गया, Wharton में भी गया, and so instead of like full length bade programs, you did a lot of these sort of short courses from different areas, and I think that'd be interesting and with work and while doing work, so right. that was a great advantage. I am shocked myself at times as well when I realized कि मैंने तो 21 साल में काम शुरू कर दिया था. I was in the office practically. In fact थोड़ा कम ही था 21 से. I was at work, but मैं masters भी कर चुका था अपना. At 21? Yeah.
Really? Yeah. So I mean, जो आपका bachelor's था, was that 2 years? Or That was 2 years of masters, but हमारे जो है साल में एक बार कोई वो टाइम चेंज हो रहा था कि दिसंबर से मिड में करेंगे मई में, तो वो 6 months का वहाँ जंप मिल गया. right? फिर द ईयर व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, ओ लेवल्स उस साल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब उसके भी कोई बैलेंस हो रहे थे, तो वो भी 2 साल की बजाय 1.5 साल में हो गया. सो आई गॉट दैट जंप. Very cool. And you did metric or you did O levels? आई डिड मैट्रिक. Right. How is Multan? I've never been, and I've heard it's a beautiful city, very sort of छोटी तो नहीं है, but वो बड़ी small city, everybody knows everybody sort of a feel है. How do you find that city? I think it is an absolutely amazing place to be in. And I think the main reason for it is for how we are able to just spend time with not just our loved ones, but also with ourselves. कि हमारे पास इतना वहाँ पर सुकून का टाइम होता है, and life is not about A hustle, a big hustle, yeah. इसको मिलना है, उसको पास जाना है, ये करना है, वो करना है. एंड अब जिस तरह आपने कहा, okay, it's not that limited, it's still a 5-6 million population of a city, but still, you know where you have to be, you know where you don't have to be, and it's easier to manage. Makes so sense. The time that you're able to give back to yourself over there, I think that's the best part of the city. Makes sense. You started your career essentially from Mahmood Group, which was the family group. Yeah. Right? Tell me a little bit about कि वो कब बना था और क्या उसकी history है, and how did by the time you had joined, क्या कुछ हो रहा था वहाँ पर? So basically my great grandfather, he was the one who started it off. So he started off with just trading leather, raw leather को वो trade करते थे, जो initially हमारा या मेरे फादर का घर होता था, उसके ग्राउंड फ्लोर पे करते थे, ऊपर वो रहते थे. And this was pre-partition? This was somewhere around 1935 के आसपास. Then on the same basis he put up a leather tanning unit, which we still proudly own and run. My grandfather, he got into business, and I think that's where the game started changing into the kind of a very real, true entrepreneur he was. He took a ginning factory at the time of partition. What's that? Ginning factory is the second process after cotton growing. तो आपको cotton को लेके उसे basic cleaning करनी पड़ती है. Right. So Pakistan in the past used to be a bigger exporter of ginned cotton. So उन्होंने उसको हाफ फैक्ट्री को लीज पे लिया, फिर पूरी फैक्ट्री को लीज पे लिया, फिर उसको बाय किया और आहिस्ता आहिस्ता जिनिंग बिजनेस को ग्रो किया. आई बिलीव समवेयर इन mid-70s भुट्टो साहब की रजीम में आके नेशनलाइजेशन हो गई. माई ग्रैंड फादर वो मुझे एक बात कहा करते थे, अपार्ट फ्राम द फ्यू थिंग्स विच आई रिमेंबर, वो कहा करते थे कि बेटा आपका काम है एफर्ट करना और अल्लाह ताला पर रिजल्ट छोड़ना है. सो एंड आई ऑलवेज न्यू कि वो ही पास्ड अवे अराउंड व्हेन ही वाज 89-90. अच्छा. But very proudly, even till the last day, he was coming to the office every day. अच्छा. और वो ये कहते थे कि I don't want to sit free. तो उसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने तब he invested into agri lands कि जी अब कारोबार तो कोई है नहीं. So वहाँ से फिर agri का business आ गया. Then my father joined in, तो we got into spinning business, which was again in early 70s, and then spinning business grow करता रहा. We are alhamdulillah one of the largest spinners and ginners today as well. Then one of my uncles joined in, तो फिर हमने weaving के business expand किया 90s में, and then the textile journey continued और फिर further businesses diversify होते रह गए. So we are exporters, the only exporters of mangoes to Japan. My brother looks after that business. One of my cousin, he looks after the poultry egg business. So we're the only exporters more or less out of Pakistan right now for that as well. And just the business kept growing, so we diversified into other businesses. Energy में किया, real estate में किया. Right. दरमियान आपने nationalization का बोला. What was that like? Because हमने पढ़ा तो है उसके बारे में, but really जो actual जिनके साथ हुआ था, तो वो हुआ क्या था कि did Bhutto साहब come and say कि listen, like hey, we'll take the factories and here's an X amount of money for it, or was it like the factories are ours and now you go and do what you do? So of course I did not experience it at that time, but जो बताया जाता है, so it was the same कि बस हम लेके जा रहे हैं and एक nominal amount आपको दे दी गई. Right. So and management अगले दिन से change हो गई है, अब कोई और management आ गई है. और you're out of your factory. That's it. That's insane. I mean, that is not just insane, but one of my uncles,
he was getting married in those days. शायद उनकी शादी का दिन था या एक दिन आगे था या पीछे था. So I sometimes am in complete awe. ठीक है आपने अभी बात की road blocks की, and I don't know if I'll be able to go back now, but look at the kind of trauma our elders also went through and all of this. 1935, that's 35 years of effort of the entire family just gone in a day. Absolutely. And you can't do anything about it. Absolutely. And so once that had happened, did you guys ever get your original factories back? We did. Eventually, I think we did. I think वो फिर martial law लग गया और कुछ और type की चीज़ें हो गई. So वो हो गया सब कुछ. But I think the थोड़ा off topic हो जाएंगे. But what is democracy is the question out here then. Right. Where is democracy then is the question out here. आप democratic government में बैठे थे और ये सब कुछ हुआ, right? Was that democracy? Yeah, and I think again these days I like to avoid that, not to get into that. But again वो conversation, वो सवाल इनका बड़ा अच्छा है. And मेरे उसमें 2 cents सिर्फ यही है कि I think we never had a system to begin with. We just had like a hybrid weird. वो post British के बाद हमने कभी बैठे ही नहीं और बैठ के बोला कि यार ये system है, ये हमारे लिए है. अजीब सा था. Maybe we'll have it, maybe we won't. But right. So when did you join the business, in what year? It was practically end of 2002. But my education was completed mid 2003. Right. And that's when I was there. And you guys were primarily exporting at the time? Yeah, local? No, we were exporting, and that's one of the main pillars we still stick to. For every business we try to run, we try to create an export angle out of it. Right. Every business we try to get into has to somehow end up exporting as well or create a global presence. Right. And most of your businesses are based out of South Punjab? Alhamdulillah, all of them. Acha. Why? Why did you never go to, let's say, theek hai, I mean, it's I've grown up in Islamabad all my life, but even I know कि business नहीं है Islamabad में, you don't have that sort of money, you don't have that sort of access, and so काफ़ी दफ़ा हम अब यानी कि even podcast में, this is the second last podcast that we're recording in Islamabad for this season, and we're going to Lahore next week, and then Karachi the week after, and then Faisalabad after that, because हमें भी समझ आ गई है कि यार go where the market's at, right? So wouldn't it have made more sense to go to Faisalabad, for example, where all the industry is, and so the talent is easily available, or go to Karachi where you can export much more easier? I would not completely agree that if we are somewhere else, we would grow better. I think to grow better, we need to travel or go and interact with people who can actually help us and give us the vision to how we can do better or grow. But I think more importantly, at least for my own sake, and one of the recent projects जो हमने अभी लगाया by the name of MG Apparel, it is more of, if not us, then who? कैसे develop होगा? कैसे चीजें ठीक होंगी? Emotional and giving back value ज़्यादा है उसके अंदर. And we love our city and the peace that we get out of there. That's why. Makes sense. चलें. So I'm gonna get into some of the more specific that and you talked about South Punjab and the emotional value that there is obviously there. 2018 से पहले तो by and large South Punjab was exclusively ignored. At least mainstream की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है इसमें South Punjab वाले आके बोलेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, but अगर मैं mainstream की बात करूँ तो 2010 से पहले हम KP को ज़्यादा सीरियसली लेते थे. सिंध में हम कराची हैदराबाद को सुनते थे, बाकी फॉर मोस्ट पार्ट सिंध का हमें कोई ख़ासा इंटरेस्ट नहीं था. बट 2018 में एक पिवटल मोमेंट आया था जिसमें आपको याद होगा कि एकदम से एक कॉन्वर्सेशन उठी थी कि साउथ पंजाब का सूबा बनेगा, साउथ पंजाब के अंदर जो है वो हमें एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. एंड उसके अंदर हमें ये लगा था कि शायद we'll begin to see, because there's a huge population there. And unfortunately, with that huge population, there's a lot of poverty there as well, and malnutrition and बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पर. But over the last 3-4 years कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया. सुनने में आया था कि साउथ पंजाब का एक सेक्रेटेरिएट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस उसके बाद कुछ XYZ हो जाएगा. So my question to you is on a two front. एक गवर्नेंस के उस पर कि इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि साउथ पंजाब इतना दूर है कि वो मतलब दूसरे पंजाब के साथ जब तक रहेगा तो वो एक तो इग्नोर्ड ही रहेगा. वुडंट मेक सेंस. एंड सो वेयर डू यू थिंक कि जो साउथ पंजाब एज अ सेपरेट सूबा वो किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है इस वक्त?
And दूसरा, what is the economic value there? Potential economic value. Like obviously, you guys are one players जो कि textile के अंदर operate कर रहे हैं. I'm assuming the mango business is also really sort of taking in from South Punjab mango farms. But what other economic opportunities do you see over the next decade or so जिससे आपको लगता है कि साउथ पंजाब जो है वो बाकी पाकिस्तान के साथ और शायद ज़्यादा स्पीड में डेवलप कर सकता है? So let me just start off with a bit of a थोड़ी पुरानी बात है. I was on the board of MEPCO, which is the electricity distribution company for let's say South Punjab. और मुझे उस कंपनी में जो मैंने 2-2.5 साल उसमें काम किया एज अ डायरेक्टर, तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ that was the first time it actually hit me that why we need a province. Because जब हम उस distribution company को देखते थे तो distance wise वो one of the largest थी पाकिस्तान की distribution company. और उसमें issues जो थे वो petty issues होते थे कि जब recoveries थी तो one of the worst है. A lot of agriculture dependent tubulls हैं, tubulls वाले पैसे नहीं देते, subsidized उनको पैसे जा रहे हैं. सिमिलरली जो रिमोट एरियाज़ में आप जा रहे हैं रिकवरी नहीं हो सक रही, इतनी मैन पावर नहीं है, इतने फंड्स नहीं हैं. एंड मे बी सिटिंग 12-13 ईयर्स देन एंड नाउ आज तक उस कंपनी में वैसे ही ऑपरेट कर रही है. सो दैट इज़ वेयर इट हिट मी द फर्स्ट टाइम दैट वाई the existence of a separate province and governance is needed. And उसके solutions जो भी आपने recommend करने थे वो आपको बार बार लाहौर से figure out करवाना पड़ना था. You couldn't have वो federal को federal को report करते थे. But of course yes, the province had the major say in it. After the सूबों को हमने इतना empower किया उसके बाद. But reporting federal को थी, but कुछ नहीं हो सका. So that's my point. And that's where it hit me for the first time कि why a province is required of such a huge size needs 2 provinces to operate. Yeah, and so where does it stand today? वो हो रहा है उसके ऊपर काम या बन रहा है. आपने भी कहा सेक्रेटेरिएट बन रहा है, हम भी सुन रहे हैं, चीज़ें भी बन रही हैं. The previous government they have placed additional secretaries and additional structure out there as well. I don't think they're empowered enough, but at least we're moving in some direction. But are you hopeful? I'm absolutely hopeful. I'm an optimist about this country. So okay. I'm a very strong advocate that in this country we need to stay optimistic, otherwise we will never be able to operate. Right. And so assuming that over the next 5 years, by either a miracle or maybe logical progression, South Punjab सूबा बन जाता है, तो what difference do you think it'll make realistically? So I think जो again I'm a very staunch supporter of the fact कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जी गवर्नमेंट ने आगे कुछ कर दिया एंड कोई बाहर से आया और उसने कुछ हमारे लिए कर दिया. आपने बात की कि वाई मुल्तान, राइट? सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी बीन इन हेयर फॉर द लास्ट 70-80 years. If Allah Ta'ala has given us a responsibility and authority, this is our responsibility then as well to make things happen for a lot of people who deserve much better. So उसी point को follow करते हुए we set up this project MG Apparel here as well, where alhamdulillah today we have 85% women empowerment. Each and every person working in the plant, around 2,000 right now, and going to be 5,000 within the next 6 months. All of them were brought in, trained from the outskirts of Multan, and giving back to the society was the main objective behind this plant. And the point is that it is just a very simple trouser making project. Pakistan में बहुत सारे होंगे, दुनिया में और भी ज़्यादा होंगे. Why we are different? Because we're the only ones doing it at a place where nobody else would ever want to do it or never thought. Because concept क्या है कि वहाँ skill set नहीं है, वहाँ पर resources नहीं है. But then who's going to do it? It has to be people out of the South Punjab who have to do it. And so in your experience, you've been in South Punjab and Multan all your life. And South Punjab को अगर मैं demarcate करूँ तो उसमें क्या क्या मेजर आएगा? भावलपुर आएगा? भावलपुर आता है, रहीमियर खान आता है, सादकाबाद आता है. So basically border sides ये बन जाती हैं. So जैसे through one of my domain, the cricket, we know that there are 14 districts which come under South Punjab. And so beyond textile, which you guys operate in, what other industries potentially exist जहाँ पर again so the way that I think, मैं बड़ा एक structured उस पर चलता हूँ कि यार ठीक है, एक दफ़ा सूबा बन गया, अब सूबा बनने के बाद फिर आपके areas of interest आ जाएंगे हैं, फिर उधर से essentially you can grow, right? So
Beyond agriculture and textile, what other potential areas of interest exist in South Punjab that can be tapped in the future? देखें, let me talk about it as an entrepreneur. Let me talk about it as an industrialist and not just somebody out of South Punjab. मुझे आज मैटर नहीं करेगा कि मैंने पाकिस्तान में कहाँ जाकर इंडस्ट्री लगानी है. मुझे मैटर ये करेगा कि मुझे वहाँ पर मेरे काम करने के लिए बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज़ हैं कि नहीं है. राइट. जोग्राफिकली देखें आप तो साउथ पंजाब इज़ प्रॉब्ली द सेंटर ऑफ पाकिस्तान. तो आप नॉर्थ साउथ सबको कनेक्ट कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर लुकिंग एट अ मार्केट विच इज़ केटरिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, FMCG है, फूड है, तो यू आर बेस्ट सिचुएटेड टू गो नॉर्थ साउथ. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मोटरवेज का, a beautiful infrastructure that we have, and it is connecting the whole, passing through the whole of South Punjab. You're getting the whole of the province connected for it. But my concern is कि traditional businesses सब कर लेते हैं. I think what we need to sort out in this country more, and as I was telling you off air as well, कि my very good friend Shahzad Roy was an inspiration for me to understand कि education इस मुल्क में चाहिए किस किस्म की. दैट वी नीड पीपल हु कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स, हु कैन बी एक्चुअली रिस्क टेकर एंड एंटरप्रेन्योर्स, विच वी लैक. हमारे पास 100 में से शायद 100 बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मैंने जॉब कहाँ करनी है पढ़ाई पूरी करके. सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन एंगल फर्स्ट, एंड व्हेन वी डू दैट देन द वर्ल्ड इज़ ओपन. टेक्नोलॉजी देखें आप इंजीनियरिंग देखें आप, वी आर नो वेयर इन दिस. So if you'll ask me where I see the real potential, because we do not have this भेड़ चाल के हमारे साथ वाले ने जो काम कर रहा है किसी और प्रोविंस में पाकिस्तान के, हमने भी वही करना है. We're going to start new. So when we look and tap into elements like technology, engineering, manufacturing of a lot of machineries जो हमारे existing industries के लिए import होती हैं, that's where I see the real opportunity. And we have abundant resources available in terms of water. We have abundant resources available in terms of land, and we have abundant resources available in terms of the garmi and heat. Now that's surprising, but because I'm a very big supporter and we already have 25 megawatts of solars ourselves, so solar is 25 megawatts. Yeah, that's for our group, and then we are a part of one of the power plants of 50 megawatts up in Karachi as well. Very cool. You mentioned machinery manufacturing, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. And the reason why I ask this is कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जब भी हम देखते हैं तो इंडस्ट्री की बात होती है तो टेक्सटाइल से शुरू होती है और टेक्सटाइल पे ख़त्म हो जाती है, विच इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट. एंड मुझे उसकी समझ इस वजह से नहीं आती बिकॉज मुझे होता है कि यार या तो मे बी इट्स द टेक्सटाइल फोक्स जिनको पता है कि गेम क्या है तो वो खेलते हैं और बाकी लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, बिकॉज इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट. लाइक बहुत सारी और चीज़ें हैं. एट द वेरी लीस्ट आप चलो एक्सपोर्ट के बिजनेस में ना भी आ सकें, आप कम से कम लोकल के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकते थे, बट पाकिस्तान में वो हो नहीं पा रहा. इवन मशीनरी की हम बात करते हैं तो वो सारी की सारी अगेन इम्पोर्ट हो रही है. पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स चलें ऑन अ वेरी वाइड लेवल डिडंट एग्जिस्ट, आई एग्री, एंड रिसेंट विद द स्टार्टअप बूम यू नो वी आर बिगिनिंग टू सी दोज एज वेल. बट even if there were people who are comparatively privileged who are beginning to do their own things, generally and historically दिमाग में ये आता था कि यार चाइना से माल मंगवाओ, ब्रांड करो, बेच दो. एंड that's a very sad वो कि मैं आपको बताता हूँ, मैं रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, आई वेंट अराउंड टू ऑल द फैशन आउटलेट्स इन पाकिस्तान एज वेल. जनरली मेरे साइज़ में पतला सा हूँ तो मेरे साइज़ की चीज़ें मिलती नहीं हैं तो मैं बाहर से मंगवाता होता था, मेरी फैमिली बाहर ही होती है. इस बार मैंने कहा यार नहीं, मैंने पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान करना है, यू नो, पाकिस्तानियत के खाते में. यूड बी सरप्राइज्ड, आई वेंट टू ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेजर ब्रांड्स एंड 90% के पास जो 90% चीज़ें थी वो चाइना से आ रही थी. दिस इज़ वेरी सैड, राइट, लाइक बिकॉज यू आर अपेरेंटली अ टेक्सटाइल कंट्री, एंड उसमें जूते तो फ्लैट आउट सारे के सारे यू नो वो चाइना में वो जो मास प्रोड्यूस जूते हैं उस पर लोगो लगा हुआ आ रहा. फिर उसमें अगर आपका लेट से के पॉलीएस्टर रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो हैं. सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आपको हुडीज़ पाकिस्तान में मिल रही थी, डेनिम मिल रही थी और टी शर्ट्स टू सम एक्सटेंट मिल रही थी. एंड सो इट जस्ट गॉट मी थिंकिंग कि इज़ इट व्हाट इज़ इट लेजीनेस, इज़ इट जस्ट लाइक यार जब चाइना से आसानी से काम हो सकता है तो क्यों हम मेहनत करें और पाकिस्तान का इंडिजिनसली कुछ बनाने की कोशिश करें.
इज़ इट बिकॉज लैक ऑफ इंसाइट कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि यार दूसरी इंडस्ट्री में किस तरह ऑपरेट करना है? जिस तरह चाइना को मैं देखता हूँ, उन्होंने हर चीज़ को रिवर्स इंजीनियर किया। उन्होंने देखा यार अगर ये चीज़ हो सकती है तो दूसरी इंडस्ट्री में भी रिवर्स इंजीनियर करो और लोकली करना शुरू कर दो। करेक्ट। एंड सो एक तो why have we been unable to expand and rather take the textile success story and expand that in other areas? Could be plastics, could be low value में ही। मैं नहीं कह रहा आईफोन बनाए, मैं कह रहा हूँ यार लो वैल्यू चाइना ने भी 30 साल पहले उससे शुरू किया था। Two ways I would want to answer this, and I think the first one is very simple कि ताली दो हाथ से बजती है, and this is something जो एटलीस्ट मैंने सारी ज़िंदगी मैंने इस बॉदरेशन से मैं भी गुजरा। आप जैसे सब लोग ये कहते थे एंड राइटली सो कि जी क्या करते हो आप टेक्सटाइल वाले, आप लोग तो डिलीवर नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, ये है वो है। सो माई अल्टीमेट कंक्लूजन आउट ऑफ बोथ द पॉइंट्स हैज़ बीन नंबर वन के I think the government never focused and realized that on a long-term basis, the policies have to be sustainable enough. And mind you, there is one thing the government needs to do, visibility. सिर्फ वो बता दे कि this is how we are going to support you or not support you. Define कर दे। हमारे पास unfortunately problem ये है कि हर 3-4 साल बाद हम एक twist में आते हैं as a country और हमारी पॉलिसीज उसके साथ रीशेप हो जाती हैं। सो व्हेन यू गो अराउंड इन आवर रीजन, जो हमारे रीजन में और मुल्क हैं, वहाँ पर द इंडस्ट्रियलिस्ट हैव अ विजिबिलिटी कि जी कम व्हाट में हूसोएवर इज गवर्निंग दिस कंट्री, हमारी पॉलिसीज ही होंगी। राइट। हमें प्रीवियस गवर्नमेंट ने टू देयर क्रेडिट ये विजिबिलिटी दी। कॉमर्स मिनिस्टर ने, गवर्नर रजा बाकर ने, द गवर्नमेंट इटसेल्फ हमें विजिबिलिटी दी। और आप देखें कि कोविड के टाइम में अब आप नंबर्स देखें तो हमारी ग्रोथ को देखें, हमारी एक्सपोर्ट को देखें, उसके रिजल्ट्स आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं और आएंगे। बट नाउ वी आर बैक टू दैट सेम सिचुएशन। राइट। IMF आ गया, ये आ गया, वो आ गया, एंड वी हैव नो विजिबिलिटी अगेन। सो दैट्स द ईजियर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द अदर पार्ट इज़ व्हाट आई क्लियरली अंडरस्टैंड। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया कि मैंने लगाया। Why did it take me 20 years in work to put it up? Why did I not do it in the first 10 years? Again, it has two answers. One is that in Pakistan, a lot of these textile companies, some of, I'd say most of them, are family-owned businesses. Was I put through the right training process to be sitting in a position and be in a position where I need to add more value to it? Maybe I was, maybe others won't. The other thing, our comfort zone. Why would I make my life difficult? And why would I not just go for the easy way of doing a business and enjoy a better life? So it's the... But then that's the really important question, right? Yeah. Enjoying the better life is really contextual. And so a lot of times Pakistan mein, people are now beginning to say कि जो हमारे sort of ruling class है, not the politicians but per se, but the businesses and the elites, वो ना गाँव का सेठ बनना पसंद करते हैं. They don't want to play in the region. They don't want to play in the world. The fact is कि the better life is still a very localized better life. The fact is our businessman, हम उसको जितना भी कहते हैं वाओ पावरफुल elite ये वो तो इंडिया से इतना सा होता है वो इंडिया के सामने. You know, वो दुबई जाएगा तो वो बहुत irrelevant होगा, to be very honest, in the grand scheme of things, and that's what makes me sad. And unfortunately, post Bhutto Sahab, we've had this sort of phenomena where we started hating the rich. We all want a better Pakistan, but without any money in it doesn't make any sense to me. Correct. Right? So I mean, मुझे वो ये होता है कि यार entrepreneurship while छोटे लेवल के ऊपर स्टार्टअप्स वगैरह के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट हमारा जो बड़ा है वो भी entrepreneurship कर नहीं रहा. वो बस जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, Absolutely. बिल्कुल रिस्क फ्री रेंट सीकिंग स्टाइल में जितना वो कर सकता है वो कर लेता है. वो ज़्यादा उसको ये नहीं होता कि यार ठीक है. एंड आई एग्री, पाकिस्तानी मार्केट इज़ अ वेरी रिस्की मार्केट. पॉलिसी कंटिन्यूएशन, आई वाज टॉकिंग टू समवन फ्रॉम द IT इंडस्ट्री पाशा साइड पे, एंड दे वर सेइंग द सेम थिंग कि यार आपने अच्छी पॉलिसी देनी है, बुरी पॉलिसी देनी है, एक दफ़ा बता दें कि अगले 30 साल ये हम प्लान कर लेंगे, हम उसके हिसाब से चल लेंगे. बट हर 3 साल बाद अप एंड डाउन करना जो है ना, जस्ट सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजेस एवरीवन. यू टॉक्ड अबाउट क्रिटिसिज्म टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड आई देयर इज वन दैट particularly the APTMA gets hit with
ever so often, and I want your opinion on that. Textile industry जो है वो बाकी everything else को साइड पे रखते हुए एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती है कि गैस एंड सब्सिडाइज्ड गैस हमें मिलनी चाहिए. पाकिस्तान में अगले 4 से 5 साल के अंदर लोकल इंडिजिनस गैस मोर और लेस बाय एंड लार्ज ख़त्म हो जाएगी. एंड सो आइदर वी आर डिपेंडेंट ऑन LNG, और होपफुली अगर हालात बेहतर हो गए और कोई ऊपर से गैस पाइपलाइन आ गई तो शायद हमें रशियन गैस या ताजिक गैस जो है सस्ती मिल जाए, शायद हमें ईरान से पाइपलाइन से सस्ती गैस मिल जाए. बट जो अगर मैं पाकिस्तान को जितना अपनी छोटी सी ज़िंदगी में जान गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो होगा. हम LNG पे ही फोकस कर रहे होंगे. एंड दैट मीन्स गैस एटलीस्ट 10 times एज एक्सपेंसिव एज इट इज़ टुडे, राइट. पहला तो ये है कि वो ट्विटर पे बड़े सारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं जी एप्टिमा वाले आके ब्लैकमेल करते हैं हर दफ़ा आके कि ये गैस पूरे पाकिस्तान को और उनको गैस चाहिए. डिबेटेबल है अगेन, योर कंट्री नीड्स डॉलर्स, तो आप अगर किसी को इंसेंटिव दोगे आप डॉलर वालों को इंसेंटिव दोगे. दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. बट ओवर द नेक्स्ट 5 years, आज तो चलो आप लोकल गैस ले सकते हो, आप आप सब्सिडाइज गैस समवट ले सकते हो, लेकिन आज से 5 साल बाद उस गैस को सब्सिडाइज करना एट द करंट रेट्स विल बिकम अनसस्टेनेबल फॉर इवन द गवर्नमेंट. एंड सो short term and long term, what's the plan there? Because cost of energy is right now the most important input in terms of the entire industry, right? And so what's the plan there? एक तो एप्टिमा का जो मेन मैंडेट या मेन रिक्वायरमेंट आती है वो एनर्जी पे आती है. सो एनर्जी के ये 2 सेक्शंस हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक गैस है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे टेक्सटाइल बेस्ड बिजनेसेस जो हैं उसके लिए गैस इज़ अ रॉ मटेरियल एट टाइम्स एज वेल, और उसकी स्टीम भी साथ रॉ मटेरियल है जिसको हम प्रोसेस कनेक्शंस भी कहते हैं. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इनएविटेबल फॉर सम ऑफ, और आईड से अ लार्जर पार्ट ऑफ द बिजनेसेस टू सर्वाइव ऑन दैट. एप्टिमा जब भी बात करती है, एंड आई वुड नॉट जस्ट से एप्टिमा, आई वुड से द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जब भी बात करती है तो वो, एंड दिस इज़ आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस इन द लास्ट 5-7 years आई हैव बीन एंगेज्ड विद नॉट जस्ट एप्टिमा बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करती है. अब आपने कहा गैस अवेलेबिलिटी का, आप डेटा निकाल के देखें पिछले 1 साल में कितनी अवेलेबल थी. कोई आके आप अखबारों में ऐड देखें कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज आपको पता है कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, आपको पता है विंटर्स में क्या होता है. जब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हम कर देंगे. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर इज़ अ प्रायोरिटी सेट. वो प्रायोरिटी क्या है? नंबर 1, आई एम नॉट एग्जैक्टली पुटिंग इन द नंबर्स क्या है. फॉर एग्जांपल नंबर 1 कहते हैं जी पहले डोमेस्टिक को गैस देंगे, फिर हम लेट से फर्टिलाइज़र को देंगे, फिर एक्सपोर्टर टेक्सटाइल को देंगे. सो आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम्स इन कि प्रायोरिटी देखें कि क्या होनी चाहिए. कॉस्ट की बात आप करें, काफ़ी हद तक इसके ऊपर डिबेट हो रही है और गवर्नमेंट के साथ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि इस किस्म का मॉडल हो जहाँ पर हिट इन ना करे टू द कंट्री. इट विल बी मोर टेक्निकल डिटेल्स, बट फॉर एग्जांपल आप अलाउ करें लोगों को वो खुद इंपोर्ट करें, जो भी कॉस्ट आती है खुद ही बेयर करें. हेज हो सकती है, लेट पीपल डिसाइड दैट ऑन देयर ओन. आप प्रोविंस वाइज देखें तो डिफरेंस है. नहीं, सो जस्ट टू कंफर्म, you're saying कि the industry is ready to have a free market as long as वो फ्री मार्केट कर दे, फिर वो प्राइस कंट्रोल वैसे ही. इंडस्ट्री ने कभी इस बात पे डिबेट नहीं किया. ऑफ कोर्स इसकी मोडालिटीज़ डिसाइड होनी है, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि प्लांट्स लग भी रहे हैं इस काम के लिए. बट फॉर एग्जांपल व्हीलिंग है, राइट. मुझे लगाने दे, मैं कहीं भी जाके प्लांट लगाता हूँ अपने लिए, सोलर लगाता हूँ, विंड लगाता हूँ, मुझे व्हील करके लाने दे अपने पास. बट उसके अगेंस्ट इतनी रेड टेप हो रही है कि आप व्हीलिंग कर नहीं सकते, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा. बट देन अगर आपने हर चीज़ में अपना नफ़ा नुकसान देखना है, फिर आप कंट्री को भूल जाते हैं. सो दैट्स वेयर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम्स इन. एंड द बॉटम लाइन इज़ कि, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, द बॉटम लाइन इज़ कि आपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है. वाई शुड वन गेट द प्रायोरिटी इज़ वॉट दिस कंट्री नीड्स टू डिफाइन. एंड अगेन एनर्जी की बात करें, सिर्फ गैस की बात ना करें. दैट्स वॉट एप्टिमास कीप्स talking about as well. And again, it's not just, I'm not talking here on the platform of Aptima. मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओपिनियन दे रहा हूँ. ठीक है, एक तो चले आपने गवर्नमेंट वाली साइड तो बता दी कि एप्टिमा जो है वो गवर्नमेंट से ही कह रही है कि ओवरऑल उस तरह से. बट मैं जनरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ बियॉन्ड द गवर्नमेंट, तो गिव इट एनी इनसाइट, राइट. द फैक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी साइड ऑफ थिंग्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड. सर्कुलर डेट इज इंक्रीजिंग.
कोई nobody seems to have a solution for that. और हर बंदा आता है आके ऑफ कैमरा वन थिंग एंड ऑन कैमरा अनदर थिंग। मिफ्ता इस्माइल साहब का वो मेरे साथ एक इंटरव्यू था जो बड़ा उसके बाद चला भी अनफॉर्चुनेटली, जिसमें उन्होंने कहा जी 12 रुपये का मैं यूनिट कर दूंगा। वो अनरियलिस्टिक था, नहीं हो सकता था, हुआ भी नहीं। और अभी भी जो हो रहा है कि 10 सोल्यूशंस बताए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि यार एक्चुअली प्रोडक्शन का मसला है, नए प्लांट्स लगा लेते हैं। कभी कहा जाता है कि यार वो एक्चुअली कैपेसिटी पेमेंट जा रही हैं। कभी पता लगता है कि एक्चुअली तो प्रोडक्शन का तो मसला है ही नहीं, कंजम्पशन का मसला है। कभी पता लगता है डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेज हैं। फिर वो पिछले दिनों ये भी आया कि यार लॉसेज वाला जो है वो एक्चुअली इट्स अ फेक न्यूज़ एसेंशियली, बिकॉज वो ग्लोबली एवरेज आउट यही है, तो कोई आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर लेंगे उसको फिक्स करके। एंड सो ठीक है, चलो वो सारे मसाइल हैं, मैं उसके ऊपर सुबह शाम डिबेट कर सकता हूँ। बट एज अ बिजनेस मैन द फैक्ट इज़ कि 10 ईयर आउटलुक में मेरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है, मैं उस कॉस्ट को तो मैं लाइक अल्लाह तवक्कल छोड़ा हुआ है मैंने कि मैजिक हो जाए तो हो जाए। मैं टैलेंट को ट्रेन कर लूँगा, मैं कॉटन का देख लूँगा कि कहाँ से मैंने प्रोक्योर करनी है नहीं करनी, वट एवर। बट एनर्जी इज़ जस्ट इग्नोर्ड। एंड सिमिलरली लाइक आई मैंशनड इलेक्ट्रिसिटी का ही तो ये मसला बड़ा क्लियर है। गैस का भी एक लूमिंग क्राइसिस हमारे सामने है, नहीं कोई उसके बारे में बात कर रहा। आपका सेक्टर भी नहीं कर रहा, फर्टिलाइज़र सेक्टर भी नहीं कर रहा, सीमेंट सेक्टर भी नहीं कर रहा। तीनों को गैस चाहिए, तीनों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर वो लोकल से इंडिजिनस से वो जब इम्पोर्टेड पे जाएगा तो वो जो कॉस्ट ओवररन है वो पाकिस्तानी सोसाइटी क्या बर्दाश्त कर सकती है? वेयर आर वी गोइंग? देखें, फिर पॉइंट वही मेरा पहले वाला आ गया कि दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टू बी द गॉडफादर हेयर एंड डिफाइन द स्ट्रेटजी ऑन दिस एंड गिव द विजिबिलिटी। आप मेरे से पूछेंगे इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा डिजास्टर इफ आई मे वाज LNG। हमने इतनी गैस ज़ाया कर दी, इतना प्रेशियस अपना LNG और CNG जो गाड़ियों में CNG राइट, हमने कितनी गैस ज़ाया कर दी उस पर। अगर इतना आपने किसी को सब्सिडाइज ही करना था, मे बी यू शुड हैव जस्ट सब्सिडाइज द फ्यूल डायरेक्टली। सो वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस जर्नी एंड वी आर स्टिल ऑन द रॉन्ग पाथ। आपने बिल्कुल सही बात की है कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट और हमें उसके ऊपर कोई विजिबिलिटी नहीं है। बट वो विजिबिलिटी तब आनी जब गवर्नमेंट ने आगे करना है कि लुक दिस इज नाउ डिसाइडेड एंड डिफाइंड फॉर द नेक्स्ट 10 years। इम्पोर्ट करेंगे, इतना करेंगे, अपना इतना होगा, ये प्रायोरिटी है। ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स सिट डाउन, एग्री, कम वॉट में कोई आए चेंज हो, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है वो बनेगा एंड दिस इज डिफाइंड। देन वी आर बिजनेसमैन, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, लेट अस फिगर आउट आवरसेल्व्स देन। बट अगर आपने हमें 6 महीने बाद एक नए सरप्राइज के साथ लेके जाना है, सो हाउ कैन वी पुट अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट? एग्री के अंदर यू गाइज आई स्टार्ट में, यू मेंशन्ड यू आर डेफिनेटली इनटू पोल्ट्री, लिटिल बिट ऑफ दैट, एंड देन यू आर डेफिनेटली इनटू एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। एंड यू मेंशन्ड के दरमियान में एग्री फार्म्स वगैरह भी लिए थे पोस्ट नेशनलाइजेशन। 2 सवाल हैं एग्री के। एक तो ये कि आई डोंट नो कितनी इंसाइट है, ज़ाहिर है आप टेक्सटाइल में फोकस रहे हैं, बट ज़ाहिर है कि फैमिली के आसपास है तो कॉन्वर्जेशंस तो होती होंगी। पहला तो ये कि पाकिस्तान हैज़ रियली पुअर यील्ड्स, हिस्टोरिकली हैज़ हैड रियली पुअर यील्ड्स। छोटे किसान से मैं बात करता हूँ तो वो तो देख के मुझे पता लग जाता है क्यों है, क्योंकि वो पुराने वक्त के एज ओल्ड मेथडोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है, डजंट हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ग्रो एंड स्केल। वो बस गुजारा चला रहा है हर साल, और उसके ऊपर 10 वो आते हैं कि आरती का मसला है, इसका मसला है, फाइनेंसिंग का मसला है, क्रेडिट का मसला है, वगैरह वगैरह। बट जब बड़े प्लेयर्स की बात आती है, पीपल हु हैव द मसल टू रियली रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री, वहाँ पर वेयर डू यू सी द एग्री मार्केट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, द यील्ड, क्या पाकिस्तान में पोटेंशियल वाइज, एंड दूसरा वेयर डू यू सी द एक्सपोर्ट पोटेंशियल? पर्टिकुलरली मैं पोल्ट्री की बात करता हूँ तो अभी रिसेंटली आई हर्ड कि देयर इज़ अ साउदी अरेबियन और दुबई बेस्ड कंपनी दैट एक्वायर्ड द मीट कंपनी, जिसका IPO हुआ था रिसेंटली। आई थिंक 50% उन्होंने एक्वायर कर लिया। आई नो दैट देयर इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज मार्केट एंड विद द ग्लोबल फूड बड़ा वो आजकल वो आ रहा है कि दुनिया में अगले 5 साल में खाने का मसला आने वाला है। एंड सो दिस कुड बी अ डिज़ास्टर फॉर अस इफ़ वी अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है बाहर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारी प्राइसेस बढ़ेंगी। एंड दिस कुड बी एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर वंस के दुनिया को मज़ीद आईफोन्स की ज़रूरत नहीं है, उनको खाने की ज़रूरत है। एंड वी आर गुड एट वन थिंग, एट लीस्ट वी कैन यूटिलाइज दैट। सो हाउ डू यू सी द एग्री इंडस्ट्री एंड द पोटेंशियल देयर, particularly in exports? The potential is remarkably huge, and I shared that on the basis of an experience के पिछली गवर्नमेंट में मैंने जहांगीर तरीन साहब के साथ एक वर्कफोर्स में काम किया, where we were
working on how to resolve the cotton crisis of this country. But the irony of it is कि वो जितना काम हुआ था, जितना मॉडल बना था, जितना proposal बना था, which was approved by the Prime Minister then as well, वो implement नहीं हुआ. And we all know the reasons behind it. So I think the problem is that we need to find where the champions are of different sectors and then let them with complete power and authority play their part in resolving this issue. That being a fact, I know a lot of private people are doing it. I am doing it myself as well. I'm at this time working on olive. I'm at this time working on dry mangoes, which are there in the market. Right. Dry apples पे काम कर रहे हैं, honey पे काम कर रहे हैं. Olives में olive oil के लिए, like that's the end product. That's the end product that we're going to get to ultimately. Right. So my point is that a lot of us are working on it, but again, policy, government की visibility नहीं है clear. कॉटन हमने इतनी, आपने मेरे से टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट की बात की है कि मरवा दिया, आपने इंपोर्ट की बात नहीं की. वन ऑफ द बिगेस्ट आइटम बीइंग इंपोर्टेड राइट नाउ इज कॉटन. व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव कॉटन, बिकॉज वी डू नॉट हैव द राइट एग्रोनॉमी एंड राइट सपोर्ट सिस्टम फॉर अ फार्मर टू हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड ग्रो इन टू द राइट यील्डेजेस. हम वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ हर कोई आ जाता है, बट प्रॉपर प्रोसेस से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने के लिए कोई काम नहीं करता. आपके पास केस है शुगर का कि हाउ द शुगर क्रॉप प्रोडक्शन इज़ एट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाई कैन वी डू इट फॉर अदर क्रॉप्स? आपने वीट और राइस को बहुत अच्छा कर लिया. रज़ाक साहब ने राइस के ऊपर बहुत फैसिलिटेट किया पिछले अपने गवर्नमेंट में, उन्होंने राइस को बहुत बेहतर कर लिया. सो राइस को बेहतर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स या राइस की यील्ड वगैरह यील्ड किया तो अल्टीमेटली यू बिकम अ ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ राइस. जब यील्ड बेहतर है, सरप्लस है, तो आपने क्या करना, उसको एक्सपोर्ट ही करना. So a lot of my friends are into rice as well, and they keep telling me कि the kind of support they got. Support क्या होता है कि आप visibility दे दें और सुन लें कि opinion क्या है लोगों के, जिसके basis पे policy देते हैं. That's it. Makes sense. So there's a huge potential. I think there's a lot of awareness amongst businessmen of my age. A lot of us are making efforts. We ourselves are doing thousands of acres of cotton planting in Balochistan by supporting the local farmers over there. Balochistan. Interesting. We're doing that. We support them. We come in as buyers for them. We support them throughout the season. We partnered with HPL in this. My very good friend Adnan Pasha was a pioneer in that. But the point is कि मेरे अकेले से नहीं होगा ये. Many of us have to do it. The government has to step in. They have to bring in these things as policy and give it incentives to people to do it as well. So the potential is huge, and this is my belief is this is the only way this country is going to be successful. जो आपने बात की कि साउथ पंजाब में क्या है, agriculture is huge. Right. And beyond the जो आपका ये again rice and wheat, what do you think about meat and poultry and इसको export बिल्कुल है. My cousin who's looking after this poultry project, he keeps advocating us about liquid eggs and powdered eggs and पता नहीं क्या क्या चीज़ है, because we're exporters, right? So he goes into the market, he studies them, but उसके जितने कितने होंगे जो अपने comfort zone को ख़राब करके, अपनी नींदें ख़राब करके, थैला उठा के दुनिया फिर के figure out करना चाहेंगे how they can create a difference. Right. We had previously Pakistan Environment Trust, I believe that's the we're a part of. And so they were here and they were talking about a couple of things. First being there's with climate change, there's a new economy coming. They painted a very interesting picture of the future of the world, where industry is directly connected to sustainability and climate change and how how essentially green you are. And simultaneously, they also talked a lot about organic. And so while जब हम yield की increase की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे GMO भी आ जाता है और fertilizer भी आ जाता है और वगैरह वगैरह. तो आप कहते हैं कि यार मतलब दो तरीके हैं ना पाकिस्तान में, या तो आप कहोगे कि यार ये आप अपने primitive age old तरीके छोड़ो और modern तरीक़ों में आओ, जो कि मुश्किल काम है. उसमें आपको cost overrun भी है, ट्रेनिंग भी है, सारा कुछ है. दूसरा एक नई अपॉर्चुनिटी आई है कि यार जो हमारे एज ओल्ड तरीके हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है ग्लोबल मार्केट में. सो सर्टिफाई करो और ऑर्गेनिक बेच दो जाकर, अगर वो ऑर्गेनिक है ऑफ कोर्स. where do you, I mean, you're operating in a lot of areas, so can you give me some context of why, first of all, from the business perspective, you mentioned you're part of the PET as well, what's the opportunity there
to be sustainable and going green? एक तो चलो ठीक है, एक तो generally आपका वो है कि sustainable होता है, अच्छा होता है, it's good for humanity. But beyond that, as a businessman, what's your potential opportunity there? Being a climate-friendly business and beyond you just being a green business, are there other opportunities as well, like organic farming and so on and so forth? So there are a couple of questions in this. So let me just start off with pet first. So pet के साथ जो objective decide हुआ है वो हुआ है to go for we went for a net zero coalition के हमने एक target बनाया कि with certain time we will be going for net zero carbon emissions. So credit to our sustainability team, the head is here. She's leading this, and I think the objective is कि as a group हम CSR की बातें करते हैं, हम लोगों को मदद करने की बातें करते हैं, but do we do enough of our part in giving back to the planet Earth as well and the sustainability part? So जो climate change की हम बातें करते हैं, so that's where the first very the connection with pet की बात होती है. So we were one of the first sign-ups in this net zero coalition. And what all did you guys do to end up as net zero? So we have a complete roadmap. Of course, the team Kekashan who leads this can give more details, but we have a complete roadmap of how we are going to get to a point where the industries that we run within the group domain are going to get to a net zero emission, where ultimately they will not be affecting the environment. So we're not just the only ones. There are more people signed up here in Pakistan, and very proudly, because of PET, Pakistan is the front runner in this right now with COP26 and COP27 as well. I think the other part of your question goes more into a generic place. जब आप अपने organic cotton की for example बात की है, so हमने एक organization के साथ partner किया है, and this is going to be somewhere around DI Khan, where we were going to have 10,000 acres of organic cotton growing done. Organic cotton is a very simple product जो कि दुनिया में हर जगह बिकता है, organic garment उसका बिकता है. But I think the real deal is not converting everything into organic, but the real deal is doing a bit of a part where you can keep more fertile land available. So it's not just us, more people from the industry are also doing it as well. So that is still being done. I think the third part of your question was more related Sorry, एक second, मैं अगर second part पे करूँ. Is there, in terms of the value chain, is there potentially more opportunity in organic? So जब हम ऑर्गेनिक कॉटन की बात कर रहे हैं, और माई अंडरस्टैंडिंग है इसके सम ऑफ द मोर लग्जरी ब्रांड, जिस तरह हम अगर बात करते हैं इंटेडेक्स ग्रुप की, तो अगर वो एक शर्ट बना रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बनी हुई है, और एक शर्ट है जो कहते हैं, जो ब्रांड भी कर रहे हैं और शो भी कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक शर्ट है, ऑर्गेनिक कॉटन से बनी है, इज़ दैट गोइंग टू जनरेट हायर रेवेन्यूज? Or is it going to be the same? The revenue will be higher, but the costs are higher as well, because one of the advantages of organic is that आप एक virgin land को convert करते हैं, a land which is not being put to any use at all. Right. But because you cannot use these pesticides and all these things in there, तो आपकी जो हम बात अभी कर रहे थे in terms of yieldages वो उतनी नहीं होती. So the cost goes higher. And that is the cost which ultimately gets transferred to the ultimate buyer if you're buying a shirt or a trouser out of a shop. So that's the difference of price you're paying. It's not the premium, it's just the additional cost that you're paying for that. Makes sense. And so do you think there is a potentially higher opportunity for Pakistan there? What I'm trying to understand is कि यार ये मार्केट प्लेस एक डेवलप हो रही है, उसमें एक तो ये ना क्या ठीक है दुनिया के पास अपॉर्चुनिटी है, हम भी खेल सकते हैं, या उसमें ये है कि यार हमारे पास we're better suited to leverage this, and so we should be getting into it. There is a difference. Because we have a lot of land which is not utilized, so we have a huge potential. और दुनिया में organic cotton की इतनी growth नहीं है जितनी I believe demand and appetite है. So Pakistan has this huge potential of not just converting those virgin lands, but also giving back something to the planet as well. So yes, we have this at competitive advantage right now. We just need to convert it more. Right. And so you were coming to the third question. Yeah. So the third question, I think it was more about sustainability. Right. So with this project, MG Apparel, we're very proud of the fact that we are the most sustainably certified lead project right now. Lead platinum है हमारे पास, हमारे जो point scoring, that's the highest in terms of sustainability in Pakistan right now as well. And
when we talk about sustainability, our domain gets expanded because हम साउथ पंजाब में हैं, तो साउथ पंजाब में हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करने के लिए एक अवेयरनेस आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो वन ऑफ द थिंग्स वी डू इज़ कि हम स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट को हमने अडॉप्ट किया हुआ, वेयर वी हैव अडॉप्टेड विलेजेस, राइट, और हम उन विलेजेस को कंप्लीट 360 डिग्री का टर्न करते हैं. ओके, कि हमने उनका हाइजीन भी ठीक करना है, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना है, हमने उनके बच्चों के स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके उनके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हमने उनके घर की बैठी हुई ख़वातीन को किचन गार्डनिंग सिखा देनी है, कुछ एम्ब्रॉयडरी सिखा देनी है, जो उनके जो फॉर एग्जांपल समथिंग विच आई वाज वेरी हैप्पी टू नोट के मस्जिद में लोग वज़ू करना जाते हैं, वज़ू करते हैं, पानी निकल जाता है, वो पानी सारा रिसाइकल होता है, वही दोबारा वज़ू के लिए यूज़ होता है, सोलर पैनल से वो रिसाइकल होता है. सो द कॉन्सेप्ट that we try to advocate, and I personally try to advocate. I was up in Davos last month. हमें sustainability का award मिला है, the only company, textile company in Pakistan. And my plea to the house over there was कि all of us talk about sustainable planet, sustainable products. How many of us talk about sustainable human beings? In a country like Pakistan, we need more of that. What do you mean by that? So it's a very vast concept, but I think the bottom line is कि क्या हम उन लोगों को बताते हैं कि उनकी हाइजीन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या वो फिज़िकली फिट है कि नहीं है, क्या वो अपनी एजुकेशन से अपने माइंड को इतना प्रोसेस करते हैं कि नहीं करते, कि दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग एज वेल, क्या वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं, क्या उनका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है कि नहीं है, and is there enough for them to give back to the society when they're at a position to give back. So that's where I think the core concept is of why I feel that sustainable human beings are very important. And when you come out of a place like South Punjab, you see the misery is more, and that's where I believe more opportunity is there for us to perform as well. Interesting. And so to my understanding, sustainable human beings would mean कि आप जब चैरिटी कर रहे हैं तो rather than वो टीच अ मैन अ फिश वाली बात है, टू फिश वाली बात है कि spend in areas where they can do good for themselves rather than them just being dependent on you for the rest of their lives. You mentioned ज़ाहिर है कि साउथ पंजाब में आपने कहा कि सस्टेनेबिलिटी की बड़ी रिक्वायरमेंट और वो है. अभी पोस्ट फ्लड्स क्या सिचुएशन है वहाँ पर? So आपने फ्लड्स की बात की है. Let me just go back to the hygiene part first. Is something very important, and with my wife around and with this project coming around, there's been a lot of enlightenment for me specifically, and अपने जितने सालों की मेरी शादी है उसमें शायद मैं उसको इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सका जितना उसने मुझे अपने आप को इन 1-2 सालों में अंडरस्टैंड करवाया, बिकॉज वी आर स्टॉन्च एडवोकेट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट में गए तो हमें पता लगा कि वुमेन हाइजीन इज़ एन इशू. आपने फ्लड्स की बात की तो मुझे उससे एहसास हुआ, और वन ऑफ द कैंपेन्स दैट वी ट्राई टू रन इज़, अगेन आई मेंशन टू यू द टीम हु रन्स इट, क्रेडिट टू देम. हमने वुमेन हाइजीन को एक पिलर बनाया अपना कि दिस इज़ समथिंग वी वांट टू डू. सो बड़ा आसान था. हमारे पास जो ख़वातीन आ रही हैं हम उनको ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम उनको अवेयरनेस सेशन दे देते हैं. पिंकटोबर आया उसके हिसाब से हो गया. माई मदर वुड कम इन, शेयर हर एक्सपीरियंसेस, माई वाइफ वुड कम इन, शी विल डू दैट एज वेल. जब फ्लड्स की बारी आई तो वी रियलाइज दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी. जो अभी आपको मैंने बताया बलूचिस्तान में वी वर सपोर्टिंग फार्मर्स ओवर देयर विद दिस. तो नेचुरली रिक्वायरमेंट आई कि जी राशन चाहिए, टेंट चाहिए, सब चाहिए, सब भेज दिया. साथ एक फ़ीमेल हाइजीन किट भी भेज दी. राइट. एट अ प्लेस जहाँ पर हम ये भी नहीं बात कर सकते थे कि ख़वातीन भी हैं कि नहीं है. दे हैप्पीली एक्सेप्टेड द फीमेल हाइजीन किट. दे हैप्पीली एक्सेप्टेड आवर ट्रेनर्स गिविंग देम अवेयरनेस एज वेल. राइट. सो माई पॉइंट इज़ कि जहाँ शायद उन्होंने ज़िंदगी में पहले ना यूज़ की हो, बट पोस्ट दिस इवेंट आप शायद वो रेगुलर जब वो वाइल दे कम बैक टू देयर रेगुलर लाइफ्स वो फिर उसको. तो हमने क्या किया कि हमने जितना सपोर्ट किया, वी मेड अ पॉइंट कि भाई फीमेल हाइजीन किट आएगी साथ तो हमारे साथ बात करेंगे, वरना नहीं होगी बात, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी. सो द पॉइंट इज़ कि हाउ मैनी ऑफ अस आर रेडी टू ब्रेक दिस बैरियर एंड हेल्प आवरसेल्फ अंडरस्टैंड के a healthy lifestyle is the most important thing, and in that female hygiene is a basic requirement. It's not a luxury, it's a necessity. So that was something very interesting for us to see as well, ke challenges mein
अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में अपॉर्चुनिटी भी बहुत आती है. Makes sense. And so we're talking about the unfortunate event. What's the reality there in terms of, I mean, मोटे हमें पता है फ्लड्स आ गए, तबाही हो गई, रहने का मसला हो गया, और साउथ पंजाब को तो ख़ास कर अफेक्ट हुआ. ज़ाहिर है कि अगेन जितनी जगह डेवलप्ड होती है उतना ज़्यादा नुकसान होता है. यहाँ पर जो ज़्यादा हमें नुकसान होता हुआ नज़र आया वो सुनने में तो यही आया कि यार एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हुई है इस सीज़न की. घर वगैरह गिर गए हैं जो गांव वगैरह हैं उनमें. व्हाट्स द एक्चुअल लाइक इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो पिक्चर, how bad is it? How bad are the floods? How difficult would it be to get back into normal shape? And do you think it's been taken as seriously as it should have been? I think for one, we are very strong people as a nation. हम लोग बड़ी जल्दी फाइट बैक करते हैं. एंड आई से दैट अगेन ऑन माई एक्सपीरियंस बिकॉज वन ऑफ आवर फैसिलिटी वो एक रिवर बैंक के बड़े करीब है. 3 बार उसमें फ्लड्स भी आ चुके हैं. सो आई हैव स्पेंट नाइट्स विद द पाकिस्तान आर्मी. किसी बंद के ऊपर सो रहा हूँ, किसी पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ हूँ, बिकॉज आई हैड दिस हैबिट कि कहीं पानी आया तो मेरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो आई शुड बी अ पार्ट ऑफ देम. नॉट दैट मैं कुछ कर नहीं सकता, बट आई शुड बी देयर. सो आई थिंक पीपल आर वेरी रिजिलेंट. In one of our plants, हमारे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अयूब शाह. he's been with us for more than I think 20 years. He himself and the 3,000 people working over there, there's a protective band around our facility. फ्लड आ गया, पानी आ गया, एक बंदा नहीं गया वहाँ से. एवरीबडी स्टेड कि जी हम अपना काम करेंगे, अपना खाएंगे, अपना रहेंगे, हमें नहीं डर लगता. सो हमारे लोग बड़े रेजिलियंट हैं, वो बड़े लॉयल हैं, वो अपने आप को मनवा के रहते हैं. सो आई एज एन ऑप्टिमिस्ट ऑल्सो बिलीव के कुछ नहीं होता हमें. बट दैट बीइंग सेड, आई मस्ट रेज दिस कंसर्न कि आई डोंट थिंक द एफर्ट दैट वी नीड टू पुट इन इज इवन क्लोज टू दैट. आई डोंट थिंक देयर इज हार्मनी and there is a sync happening in terms of the relief efforts that need to be done. Maybe it's the political situation, maybe it's the economic situation, but the only ones suffering are the people who are out there. And I feel myself as guilty as well. I tell my friends कि यार the kind of effort we used to put in, हम नहीं कर रहे इस बार. I remember the earthquake, I remember these floods. I don't think we're close to that. And उसके repercussions या उसका outcome हमें नज़र आएगा, do you think? Absolutely. In a few months? Absolutely. If nothing more, look at the kind of lives you will lose. Look at the kind of health issues which will be there. But frankly, there's only a bit that a private individual can do. There's only a bit that organizations like Al Khidmat can do. The government has consolidated effort to government. The government has to top-down approach. Army does great work. I've seen them this year again in South Punjab doing it again as well. But the government is the real deal here. Generally, when you look at South Punjab, when you compare it to other areas of Pakistan, how do you see the education level there? And how do you see the people? ज़ाहिर है जब भी एक comparatively disconnected इलाका जो है, it's not necessarily disconnected, it's not बलूचिस्तान, वो तो generally बहुत different है उस तरह से, but impoverished इलाका जब generally होता है तो in the start there's a large effort required to sort of move them. ना वो होता है कि एक inertia होता है जिससे आपको move कराना सबसे मुश्किल होता है कि listen, like make this effort and it is going to bring good things to you वाली बात है. They're not generally they're not the sort of people जो कि not talking about South Punjabis but generally जो लोग जहाँ पर ज़्यादा opportunity नहीं होती उनको ये कहना कि यार come work, वो एक culture develop करना है, मेहनत करने का, वो सारा कुछ करने का. बट अगर मैं साउथ पंजाब को देखूँ तो मैं बड़े I've had some really interesting insights and stories coming out. I know someone जो कि IT and tech के अंदर काम कर रहे हैं. They recently had a conference there as well. There was a brilliant turnout. Sure, the quality of talent will not be the same as let's say Lahore, but the fact was that there were a lot of people interested. Young people जिनको आप सोशल मीडिया पे घूम घुमा के उन्होंने सीख लिया कि यार डिजिटल सर्विसेज होती हैं, फ्रीलांसिंग होती है, वो उसके अंदर काम करना शुरू हो गए हैं. So in that context, how do you see the people of South Punjab? Do you think there needs to be an effort to sort of upskill them, tell them कि यार listen, come to work and
वो ज़ाहिरी बात है कि काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, वेल्थ क्रिएशन होगी, तो यू हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल फॉर एवरीवन, राइट? एंड सो जनरली नॉट जस्ट विद साउथ पंजाब, आई थिंक ये मसला पूरे पाकिस्तान में रहा है कि वी आर इनहेरेंटली अ वेरी लेजी नेशन. हम कहते हैं कि हमें सस्ता ये मिल जाए और सस्ता वो मिल जाए, बट उठ के काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अगर वो मैं अगर कंपेयर करूँ ना विद इंडियन एंड चाइनीज़ कल्चर्स, इंडियन एंड चाइनीज़ एक्चुअली बोथ वर कंपैरेटिवली वेरी सिमिलर पोस्ट ओपियम चाइना, communist India, but they really opened up in the 90s with the World Trade Organization and the financial crisis in India in 1991, and they built a culture of working hard to build a better life. That I unfortunately see lacking in Pakistan at this point in time, across the board. South Punjab को अगर आप देखते हैं तो आप कैसा पा रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? I feel first of all कि this myth is not correct because with this project that we set up, वो सबसे बड़ा हमें चैलेंज यही बताया जाता था कि आपको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगी. Now alhamdulillah, when I look at my human resource, 70-80% are people from South Punjab who did not have the opportunity to work here, और उनको लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में काम करना पड़ता था. So they're now all sort of coming back home, and still a lot of people I interview are the ones who want to come back. So again, I think as businessmen, as entrepreneurs, we failed to give them the opportunities to operate in their own hometown. I don't see a mismatch of skills. As you know, through a couple of with a couple of friends as a syndicate, Shoaib and Kashif, we invest into startups. और जब हम स्टार्टअप्स को देख रहे होते हैं, जब हम उन नंबर्स को वर्क बैक करते हैं, तो 40 to 50% आर कमिंग आउट ऑफ द बेल्ट ऑफ साउथ पंजाब. बट द पॉइंट इज़ कि शायद उनको अपने आप को उस तरह मार्केट नहीं करना आता. द पॉइंट इज़ कि हमने एज बिजनेसमैन, एज पोटेंशियल मेंटोर्स, उनको वो बताया नहीं कि हाउ दे हैव टू गो एंड सेल देमसेल्व्स इनटू द मार्केट. So that is why you see these surprising cases coming out where you see a lot of people coming in with these extra skills out of South Punjab. But the whole point is कि वो लोग तो शायद अपना effort अभी भी कर रहे हैं, but are we as industrialists, as entrepreneurs, giving them this visibility, this viewpoint? So what we do in our startup ecosystem, especially as a syndicate, we focus a lot on being the right mentors as well, and not just investors. So that's where we do it, and a lot of our skill set is focused on South Punjab as well, कि हमने वहाँ पर इस चीज़ को और बेहतर करना है. Makes sense. You're the chairman for South Punjab Cricket Board. Yeah. And that's very different. I see the smile on your face as well when you keep mentioning it as well. There's a difference there between all of the other things that you're doing, and then suddenly there's cricket, right? Yeah. So tell me a little bit about वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, and if I remember this correctly, there was a change in structure. Yeah. We had a conversation recently on the podcast as well, where the guy was fairly critical of this new structure. He was like, वो वापडा and PIA and वो वाला system जो था वो बड़ा अच्छा था और खान साहब ने आके तबाह कर दिया. And so what's this new structure, and how did you come across getting into this? So let me talk about the structure first. I know this is an ongoing debate. मैं डिबेट में नहीं जाता, मैं डिस्कशन में नहीं जाता. बड़ा अच्छा सिस्टम होगा पिछला भी. सिर्फ मुझे ये बता दें कि मेरे डोमेन में, साउथ पंजाब में, एंड ऑफ कोर्स आई नो इन द अदर प्रोविंसेस एज वेल, 12 साल से स्कूल क्रिकेट नहीं हुई थी. क्यों नहीं हुई थी अगर इतना अच्छा स्ट्रक्चर था वो? दैट्स इट. That's my answer. क्लब क्रिकेट नहीं हो रही थी, स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही थी, स्ट्रक्चर्ड ग्रास रूट क्रिकेट डेवलपमेंट नहीं हो रही थी. एंड आई थिंक दैट्स वाई, एंड इट्स वेरी इजी टू से खान साहब ने सिस्टम ख़राब कर दिया. आई थिंक there's an empowered board where people are independent to take decisions. They agreed to it, they took a decision, and this is a philosophy where successful models in the world are running as well. So that's, I think मैं उसकी और डिबेट में नहीं जाऊँगा because I know there's a lot of political strings attached to it as well. But हुआ कैसे? Two of my very good friends, Ali Tareen and तैमूर मलिक, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे कि हमने स्पोर्ट्स में क्या करना है, और स्पोर्ट्स में फॉर ग्रास रूट क्रिकेट हमने क्या करना है. हमने वहाँ से इसके ऊपर काम शुरू किया. And we stumbled upon this opportunity because South Punjab हम तीनों के लिए बड़ा एज अ कोर, समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, वो एग्जिस्ट करती थी. एंड वी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी कि दिस इज़ समथिंग वेयर वी कैन एक्चुअली डू रियली समथिंग फॉर द प्रोविंस.
सारे पाकिस्तान की तरह हम क्रिकेट क्रेजी तो हम हैं, वो भी था, पैशन भी था. And we felt that the kind of flavor we can add into, I'm not a professional cricketer, शायद मुझे बहुत से कम पता होगा, but the point is कि we're here to manage things, we are here to lead things and not technical part. को technical part के लिए बहुत experts बैठे हैं. And that's where we got into this journey कि हमने ये part करना है. And then it has been one of the best things I've come across in the last 1.5 years. And what are you guys doing there in terms of cricket? You know, with the chairman Ramiz Raja coming in, we've just had a 360 view of what is actually expected out of us. We have a full calendar year. 14 districts are there. So starting from school cricket, जिसका मैंने आपको mention किया, मैंने आपसे बात की club cricket की, मैंने आपसे बात की university cricket की, college cricket की. So all of that is happening now. So there's a full calendar year where throughout the province, अभी भी जैसे I think 175 schools are playing right now. अच्छा. तो उनकी अपनी हर स्कूल की अपनी टीम है. हर स्कूल की अपनी टीम है. लीग की तरह खेल रहे हैं. लीग की तरह खेल रहे हैं. So हमारे ambitions में ये है कि फिर because there are 6 provincial teams, then फिर हम province की टीम बनाएंगे. फिर उनका हम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भी उसका फाइनल हुआ था स्कूल क्रिकेट मुल्तान, इधर मुल्तान वाले का. फिर हम कज़ाफ़ी में ले गए. The other thing which is very close to us in South Punjab is women cricket. तो हम उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं. अभी through the help of some sponsors we developed a cricket ground which was more of a metro leftover debris. तो उसको क्लियर करके हमने क्रिकेट ग्राउंड बनाया. एक स्कूल का ग्राउंड था बट उसमें PCB ने हमें हाइब्रिड पिच बना दी है. सो हमारा प्लान ये है कि पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ पंजाब में विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हमने प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट लेवल के ग्राउंड्स क्रिएट करने हैं. अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सो दैट दे कैन हैव देयर ओन, जो इनके लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो. एग्जैक्टली. तो हमने वो क्रिएट करना है. हाइब्रिड पिचेस बनानी है ताकि दे आर एबल टू प्ले बेटर. जैसे अब हम इंशाल्लाह कल सेमीफाइनल जीतेंगे और फिर हम संडे को फाइनल जीत लेंगे, तो फिर you will see that this kind of better cricket. So the objective is grassroots cricket. Right. The objective is women cricket, and the last and most important is this is where we need to engage our youth as well. मैंने आपसे बात की healthy activity की, मैंने आपसे बात की hygiene की. Why not something as fruitful as a physical healthy activity? तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने अभी एक 100 बेस्ट SPCA प्रोग्राम लॉन्च किया है. तो उसमें हम इन बच्चों को हम स्टाइपेंड देंगे, हम इनको खिलाएंगे, हम इनको ट्रेन करेंगे और उनको हम सिखाएंगे खाना कैसे, बात करना कैसे, बोलना कैसे. बिकॉज अल्टीमेटली आपके ये हीरोज़ हैं. सो हीरोज़ को हमने देखना है. मेरा माय सन 2 साल पहले मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि जी मेरे बाल अब आप गोल्डन करा दें. मैंने कहा यार मैं तुम्हारे बाल क्यों गोल्डन कराऊंगा. एंड आई डोंट वांट टू नेम द क्रिकेटर. उसने कहा देखें आज उसने 5 विकेट्स लिए हैं और उसके बाल भी गोल्डन है. That's where it hit me. You know, we need to focus more on having these heroes. Because they're role models, right? And so, जितना जिस तरह से वो अपना, मतलब they can't just be random, right? Like there are a lot of eyes there, and so the way that they react in the public is going to really impact a lot of young people. Absolutely. Looking at them, very interesting. थोड़ा सा मैं conversation को shift करूँगा towards पाकिस्तान में concept होता है सेठ कंपनीज का. ज़ाहिर है आपकी भी एक थियोरेटिकली एक सेठ कंपनी. हाँ बिल्कुल. अच्छा, सवाल को मैं 2 एरियाज़ में डिवाइड करूँगा एंड आई वांट योर इनसाइट ऑन बोथ ऑफ देम. फर्स्ट ये कि जो हमारे यहाँ सेठ कंपनीज़ हैं उनका जनरली जब कहा जाता है ना कि सेठ कंपनियाँ बड़ी बुरी हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट आता है प्रोफेशनल्स जब डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार वो सेठ कंपनी है, ERP नहीं लगवा रहे, डेटा एनालिटिक्स नहीं करवा रहे, वो कह रहे हैं यार हम तो ऐसे काम करते आए हैं, हम आज तक करते रहेंगे. अच्छा, उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हाँ द सेट नोज़ बिजनेस, तो दे नो कि मेरे लिए क्या यूज़फुल है क्या नहीं है. बट ऑल्सो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि स्केल का कॉन्टेक्स्ट नहीं आ पाता क्योंकि पाकिस्तान में हमने हिस्टोरिकली प्रोफेशनल्स को इंटीग्रेट नहीं किया. और वो इंटीग्रेशन हमने ग्लोबली देखा कि यार वाइल वन ओन्स द कंपनी, वी चेयरमैन ऑफ द ग्रुप or the chairman of the board, but have a professional CEO rather than just becoming the CEO yourself, right? So first of all, मुझे ये बताइएगा कि how do you see legacy businesses run in Pakistan in the context of scaling with professional resources? Again, a very good example recently would be कि IT, मतलब people generally tend not to expect कि IT में भी सेट होगा, but systems is a legacy सेट company.
एंड जब से आसिफ पीर साहब आए हैं, ही ब्रॉट इन एन एंटायर सॉर्ट ऑफ leadership from Oracle and IBM, and the scale has been in front of you, right? It's phenomenal. It's the processes, and more often than not, professionals help build processes. So you can have your own company with like 3, 4, 5,000 people the way that you used to, but you don't know world-class processes, and professionals help you build those. But मैंने अभी तक देखा है कि बाय एंड लार्ज मोस्ट स्टेट कंपनीज आर अवर्स टू दैट. पाकिस्तान में एक ट्रस्ट का डेफिसिट है, हमारे हाथ से निकल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा एंड वगैरह वगैरह. सो पहले तो मुझे इसका जवाब दें कि एज अ स्टेट कंपनी हाउ डू यू सी दिस सॉर्ट ऑफ मैरिज बिटवीन और ओपनिंग अप टू द प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, कन्वर्टिंग योर फैमिली रन बिजनेस टू ए लार्ज स्केल कॉर्पोरेट एंटिटी एंड देन रियली स्केलिंग टू बी. और इसमें फिर वो टाई अप होगा, वो जो पहले हमने बात की कि हमारा जो बड़ा है वो ग्लोबल और रीजनल स्केल में खेलने के लिए इनकेपेबल है अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ. I think this has to start number one with education. We as what you call as state businesses or family businesses, education and learning is where we have to create a difference. And if I have a firm belief that if Allah Ta'ala has put us in this family and there's a lot of responsibility on us to do as well. But then again you also have to see your skill set. My brother जिसकी हम पहले बात कर रहे थे जवाद की, he's a true entrepreneur amongst us. वो उल्टा काम करेगा जिस पे वो 3 साल डांटे खाता रहता है सबसे कि ये क्या किया तुमने, and then he's the superstar of the family as well. Right. But the point is कि everybody brings in different. So I am an IT guy. I am very strong in systems. I do it with my friends and colleagues. I've got a friend in Peshawar, Afan, a brother. I've got a friend in Karachi, Adil. So we talk about all these things that as businesses, they're all family businesses. That's right. what I'm trying to highlight. Right. And these are some of the brilliant minds you have in Pakistan. That being said, आपने आसिफ की बात की. Asif is a great friend, but आसिफ के साथ साथ you have Hasan as well from Daraz. He's a hero. We have Faizan from Book Me as well. So we're very proud of them as well. But जब आप family business की specifically बात करते हैं ना, I think as businesses, we need to grow into more professional structures as well. And I feel that is happening now. That is happening to a larger extent because जो मेरी generation वाले लोग आए हैं family businesses में, वो बहुत ज़्यादा education background के साथ भी आए हैं. वो education आप समझें कि status की वजह से ली गई कि जी मैं फलानी जगह से पढ़ के आया हूँ, whatever that is. But a lot of professionalism has come in. आपको professional से ही काम कराना है. आप हर जगह पे खुद काम नहीं कर सकते. हमारे ग्रुप की आज सक्सेस की बहुत बड़ी रीज़न जो है वो आज मेरी कोर टीम है. They are the main reason why we are there. And something which I've been a very strong advocate of throughout this time has been more of with regards to I have to support my team in making independent decisions. मेरा commercial का head है Yaya. He has been a pillar, always finding something new. Our CFO Yasser, he makes our life miserable, but at the same time he makes us sleep well in the night. Similarly, marketing की team, everybody does their part. It's remarkable how these professionals can actually bring in these loyalties and actually make things happen for us. Makes sense. And so the second part of that question would be कि जब हम historically family businesses को देखते हैं and you're also part of ground up and you're investing in companies, तो पहले जब early on मुझे याद है 2013 के बाद ना थोड़ा सा एक आना शुरू हुआ कि ये स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. तो जब सबसे पहले एक तो आपका बाहर का पैसा आ रहा था, एक लेगेसी बिजनेस वाले आ रहे थे. लेगेसी बिजनेस वाले आ रहे थे तो वो आ रहे थे कहते थे यार 51%. The way that they would work is again not very startup friendly in the way that the startups work. And so again I do understand. Generally मैं करता ही हूँ कि मैं किसी को भी I don't see anyone as a boogeyman. I think everybody comes with their experiences and try to play the game because of their own mishaps and वो. And so I understand कि trust deficit की वजह से ना हर बंदा कहता है कि यार total control मेरे पास है, मैं क्यों किसी जगह पर घुसूँ. And वो एक risk averse nature है economy की. छोटी economy है, not so advanced economy है, and so people tend to be very protective of themselves and survival of the fittest बहुत strong होता है. But then जब तक आप अगर इसी mentality में रहेंगे तो आप कभी भी grow भी नहीं कर सकते, right? And so
स्टार्टअप्स के उसमें तो मैं नहीं घुसूंगा, जाहिर है उसमें आप आई एम श्योर जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं अब आप 50% वाला ड्रामा तो पीछे रह चुका होगा। मैं जिस पे जाऊंगा वो जाऊंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। आई बीन वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट द पास्ट 2 years एंड आई बीन वेटिंग कि यार मैं इंडिया को देख रहा था, मैं कि यार वाह इंडिया ने पहले तो हमने बाहर देखा कि रॉबिनहुड की वजह से कितनी डेमोक्रेटाइज हो गई, हर बंदा चलता फिरता जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहा है। फिर हमने देखा कि यार चलो अमेरिका तो मार्केट ऐसी है ना, कैपिटलिस्ट हेवन ऑफ द वर्ल्ड, चलो वहाँ तो हो सकता है। फिर हमने देखा इंडिया में भी ये हो रहा है कि वहाँ का नौजवान जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में हमारा नौजवान पैसे जब थोड़े से जोड़ लेते हैं ना तो वो कहता है यार काम उसका ₹1.5 का ये नहीं होता, वो शायद फ्रीलांसर होगा, लेकिन यार रेस्टोरेंट खोलते हैं, चाय की दुकान खोलते हैं। यार भाई तुझे क्या पता चाय की दुकान किस तरह चलती है? या वो ये करेगा या वो दूसरा करेगा कि फाइलें खरीदेगा और पंप अप करेगा एक प्रॉपर्टी मार्केट। दैट जस्ट आई मीन मैं जितनी दफ़ा बोल चुका हूँ ना, इट बॉइल्स माई ब्लड, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। We're wasting our money, we're wasting our agriculture land in building these dead ass assets for no reason at all. Agreed. And the reason, अच्छा पहले मैं शायद कहूँ यार maybe I'll go blame the ordinary person who's putting their money, but the fact is कि वो ordinary person पैसा किधर डाले? प्लॉट में नहीं डालेगा तो उसका पैसा किधर डालेगा? डॉलर खरीदेगा तो डॉलर खरीदेगा, डॉलर पंप अप होना शुरू हो जाएगा, गोल्ड खरीदेगा, गोल्ड पंप अप होना शुरू हो जाएगा। ये तो सारे एसेट्स हैं ना। प्रोडक्टिव एसेट तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में एक ही है, वो है बिजनेस। बिजनेस पैसा ले नहीं चाहता, बिजनेस IPO नहीं करता, वो अपनी सक्सेस शेयर नहीं करना चाहता, वो जाके हैस्कॉल की तरह जाके वो 50 अरब रुपया निकाल के उसको डुबा देगा, लेकिन वो अपना रिस्क शेयर नहीं करेगा। और पब्लिक के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली ये फिर एपेटाइट नहीं है कि यार मैं लेट मी ओन अ पीस ऑफ द बिजनेस एंड आई विल बी विद देम इन लॉसेज एंड आई विल बी विद देम इन प्रॉफिट्स। और बिजनेस खेलता भी फिर इस तरह अजीब सी ट्विस्टेड सी मार्केट है कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं उनको भी अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज को बड़ा क्रिटिसिज्म भी आता है कि वो जो है ना वो डिविडेंड देते हैं ना वो शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा शेयर होल्डर होता है, वो जो मेन प्राइमरी ओनिंग ग्रुप है वो बस अपना ही घुमा फिरा के फ़ायदा निकाल लेता है, शेयर होल्डर को आखिर में फ़ायदा ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी फारग हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि यार रियल एस्टेट पे एमनेस्टी ले लो और स्टॉक मार्केट में 30% टैक्स दो, उसके बाद डजंट मेक सेंस एट ऑल। बट कमेंट्री एंड अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाई डोंट वी हैव ए थ्राइविंग स्टॉक मार्केट first of all, and second of all, why don't we have legacy businesses going out there and scaling themselves, putting themselves out there for the public to buy in, share ownership, create those sort of corporate structures. एंग्रो ने किया ना जिस तरह फॉर एग्जांपल, और बहुत सारी ऐसी नेम्स हैं जिन्होंने किया, बट बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो खामोशी बैठे हैं। वो जो है जी वो एक हैदराबाद का ग्रुप है, अच्छा जी वो पेशावर का ग्रुप है, वो बस अपने दरवाज़ों से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। Why do you think that is, and what are your thoughts on that? You're absolutely right about everything you said. So let me start off with that. मैं मुल्तान में ना हमेशा कभी कभार ये कंप्लेन करता हूँ for all the good things, and this is the good thing as well कि I see around people, तो वो करते क्या हैं कि उनके एग्री लैंड है, उनका सीज़न आएगा, वो 2-3 महीने काम करेंगे, बड़ी अच्छी इनकम हो जाएगी, बाकी 9 महीने वो आराम से जब दिल चाहेगा सोएंगे जागेंगे, 4 गाड़ियाँ बुक कराएंगे, उनको ऑन पे बेच देंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम आ गई, कुछ भी नहीं करना। एंड माई वरी टू दोज गाइज आर के व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट यू आर सेटिंग इन फॉर योर किड्स, राइट? सो दिस इज़ वेयर द पॉलिसी फ्लॉज कम इन, कि आपने पॉलिसीज़ क्यों नहीं ऐसी बनाई जहाँ पर आप इनकरेज करें लोगों को टू गेट इन टू अ रियल बिजनेस। टू Absolutely right again, it is not a matter of कि वो businesses क्यों नहीं open up करे, it is also a matter of कि उन businesses की आज need है। We are operating in a country where the interest rates are one of the highest as well. So उन businesses को भी understand करना है कि for us this is a free money in the market by selling some part of your company and giving it to more people. We just need to open up. और पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू हुआ in the last 2-3 years कि बड़ा अच्छा develop हुआ। If I have the information right, a lot of the companies are still in pipeline as well. You'll see them upcoming as well. It is a journey which has started. So I know a lot of my friends out of Karachi, Tanish hai, Ali Fareed hai, Moody hai, they're making a deliberate effort where आप market size of investor बढ़ाना चाह रहे हैं। जो आपने बात की कि एक आम बंदा घर में बैठ के शेयर्स क्यों नहीं खरीदता, वो आज हबीब बैंक का ओनर क्यों नहीं बनता, वो आज लकी सीमेंट का ओनर क्यों नहीं बनता।
ब्यूटिफुल एसेट्स, वेरी चीप। Yeah. तो ये डबल काम है जो कि हो रहा है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम पीछे हैं, बट हो जाएगा। बट हो जाएगा। Are you? आई एम वेरी होपफुल हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। जहाँ पर आप एजुकेट करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी जहाँ पर आपको फाइल्स के अंदर पैसे नहीं मिल रहे होंगे, आपको गाड़ियाँ बेचने खरीदने में पैसे नहीं मिल रहे होंगे, ईजी मनी नहीं होगा। सो व्हेन पीपल विल हैव मनी दे विल फाइंड दिस ऑटोमेटिकली कि हमने कहाँ पैसे डालना है। फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोग, वहाँ पैसे ले सकते हैं, बट अवेयरनेस होनी है, एजुकेशन होनी है, तो ये काम हो रहा है। And some But do really you good think people are- companies, एक तो देखें Ali Fareed was here as well and I know that he's doing some phenomenal work. Yeah. I remember कि वो Courier Solutions को लेकर भी आए थे, पाकिस्तान जर्मन कंपनी है, very fast growing, नहीं हो सका उनका, buy नहीं था। Yeah. तो एक तो एलिमेंट है डिमांड क्रिएशन का कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस की जाए कि यार ये दिस इज़ अ गुड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्चुअली जो आपका पैसा बर्न हो रहा है बैंक अकाउंट्स में, ये तो बाद में ये चले एक सर्टन सेगमेंट है ना, गाड़ियाँ बेच रहा है, एक सर्टन सेगमेंट है जो फाइलें खरीद रहा है। मैं तो बहुत सारों को जानता हूँ जो कि लिटरली उनका पैसा बर्न हो रहा है विद द करंट इन्फ्लेशन रेट, वो बैंक में पड़ा हुआ बर्न हो रहा है। एंड नोबडी शुड कीप मनी इन द बैंक, दैट मनी शुड नीड्स टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर, प्रोडक्टिव सेक्टर, राइट। बट अगेन मैं अगर देखता हूँ तो चलें ठीक है, मैं लकी में देख लेता हूँ, मैं जो 4-5 हैं, बट आई एम एक्साइटेड फॉर न्यू प्लेयर्स जो कि वो आएँ, और वो नए प्लेयर्स नहीं आ रहे। वी डोंट हैव इनफ IPOs इन दिस कंट्री, तो वाइल डिमांड क्रिएशन में प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा नहीं हो रहा कि मैं कहूँ कि यार ये एक सक्सेस। जिस तरह अगेन द मीट कंपनी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वो गए, उन्होंने जाके जो है जी उन्होंने कहा जी हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने जाके पहले IPO किया, पैसा रेस किया, स्केल बनाया, स्केल शो किया। मतलब यही स्टोरी अगर बाहर होती ना, वो एक खूबसूरत स्टार्टअप स्टोरी बेची जा रही होती। मुझे तो इट बॉगल्स माई माइंड, नोबडी इन पाकिस्तान नोज अबाउट इट। उन्होंने स्केल बनाया, पैसा मार्केट से उठाया, स्केल बनाया, स्केल बना के नंबर्स ड्रॉ किए, नंबर्स ड्रॉ करने के बाद 50% जाके फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिया एट अ वेरी गुड प्रीमियम। नोबडी नोज अबाउट इट। And if enough people knew about it, they would be waiting for the next company to come in so that they can give their money in, right? Do you think there is a mentality shift also within the legacy businesses or the कि मतलब आप स्टार्टअप्स के साथ डील कर रहे हैं? हिस्टोरिकली हमने ये सुना था कि यार पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का एग्जिट इज एन एक्विजिशन, राइट? ग्लोबली आप क्या कहते हो, वेट करते हो यार IPO होगा तो पैसा बनेगा। करेक्ट। पाकिस्तान में हमें पता है कि यार IPO क्या मतलब, क्या बातें कर रहे हो भाई, एग्जिट होगा। Do you think there is going to be a change, a shift in that mentality? I think हो चुका है। जेम बोर्ड लिस्टिंग हो रही है, कुछ कंपनीज हो चुकी हैं, हमने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं उसमें, वो अब मेन बोर्ड पे आएंगी। सो आई थिंक फारूक खान वाज इंस्ट्रूमेंटल, जो CEO हैं PSX के, ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब इन क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस। सो माई पॉइंट इज़ कि ये सारा चेंज हो रहा है। आपने जितनी बातें की हैं ना, ये सब आ रहा है। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो मेरी भी है कि उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह हो जाना चाहिए, बट आई सी दैट हैपनिंग। प्रॉब्लम कहाँ आती है? इकोनॉमिक टर्मोइल आ गया, पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, किसी ने कोई बयान दे दिया, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जब आप अली से पूछेंगे वो क्यों नहीं हुआ, अली विल टेल यू कि वो इस वजह से नहीं हुआ कि उस टाइम पे ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने कहा कि यार मैं ज़रा 6 महीने बाद डिसाइड करूँगा। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन दिस कंट्री। बट ये होगा सारा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह। टाइम लग जाएगा बट हो जाएगा। Makes sense. Anish bhai, we're at the 1 hour 24 minute mark and I'd like to wrap this up here. But एक सवाल मैं जनरली तमाम अपने गेस्ट से पूछता हूँ and I want your insight on this as well. And it's interesting that you're I wouldn't say, I mean, you're a hopeless optimist because interestingly, this is probably the 280th conversation that we've had in the last, and we've had it running, so we didn't have take any time off. But I've seen a variation of how the answer to this question has changed month on month, depending on जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपकी सिचुएशंस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह इम्पैक्ट करती हैं। इस सवाल के जवाब से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब लोग आए तो उन्होंने किस तरह चेंज किया। यू ऑन द अदर हैंड, in the current scenario when even the most optimistic person has become hopeless, are still hopeful. I want to have an insight on how do you see Pakistan 28 years from now, in 2050, seeing what you've seen now, knowing what you know. जाहिर है बंदा देखता है अर्ली डेज़ के अंदर आप एक कंपैरेटिवली एक छोटे शहर में थे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि you were in Multan but you were also part of a
a legacy business family, and so you had a good connectivity and good insight, and then eventually you traveled across the world. You took all those courses as well, but also through business and otherwise आपकी वो insight और ज़्यादा grow की. पहले वक्त में आई एम श्योर आप पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीके से देखते होंगे. जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, होलिस्टिकली आपने देखा, आपने कहा कि यार चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, बट ऑन अ लार्जर स्केल इट विल हैपन, राइट? सो गिव मी दैट मैक्रो इंसाइट बियॉन्ड द छोटी मोटी गवर्नमेंट की पॉलिसी और ये और वो, कि अगर यार एवरीथिंग जो भी वेरिएबल है वो हो, 28 साल बाद कुछ फंडामेंटल्स तो शायद बदलेंगे. वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन 2050, 28 ईयर्स फ्रॉम नाउ? फंडामेंटल्स बदलेंगे, वो इस वजह से बदलेंगे क्योंकि आपको और मेरे जैसे यहाँ बैठे हैं. Who are now my optimism is based on the fact कि जब मैं अपने बच्चों को अपने साथ देखता हूँ कि वो सुबह उठ के 8 बजे ऑन अ संडे बैठे हैं कि उन्होंने मैच देखना है पाकिस्तान का. दैट्स फॉर द लव ऑफ द नेशन. आई सी दैट बिकॉज आई सी मोर नंबर ऑफ पीपल इन माई लाइफ स्पैन who are actually wanting to do something for the country, who are actually wanting to make a difference. I see that happening because I think now people feel ownership of this. We fight for this country, we want to fix things, and I see a lot of brilliant minds. हमने कितने लोगों की बात की है? They're all doing fantastic work in this country. So I don't think we're that same nation anymore where where we are not ready to invest back into this country, where we're not ready to do our part of improving this country. So the optimism is coming all from there. Turmoil जाएंगे, हम business में होते हैं, business में भी 2 बहुत अच्छे साल थे. Right now is one of the worst time we have in our businesses. But that's what we are here to do. Nobody promised us that we'll have a sweet ride all throughout. So what I see in 2050, I see that this country is going to prosper. I see that a lot of our root causes will be fixed. I see a lot of great work which has been done in the last few years will actually start giving in results. I see that our literacy will be much higher. I see a lot of entrepreneurs will be coming around. And with that, I think there's no stopping to this country. Chale, I hope we can see that Pakistan, and I am excited to see your vision of the future for this country pan out. Anis bhai, thank you so much for coming in and sharing all the insight. Absolute pleasure. I wish you all the very best for all of the things that you're doing. It's I don't know how you manage your time. I'd love to read a book someday of that experience. But thank you so much for coming in. My absolute pleasure. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई और अपने दोस्तों यार के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों में हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा, जैस कैश, सादा पे आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम 1 रुपी टू एज मच एज यूड लाइक. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ we are doing something very exciting for season 4. And so if you guys, particularly people from the brand side, agency side, if you'd like to get in touch, we are starting a partnered segments. The email address is somewhere in the channel, so you can reach out to us and we'd love to have a conversation. But anyways, this was Muzamil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.